नमस्ते सभी को। हम आपका स्वागत करते हैं डिजिटल नारी ऐप के वर्चुअल लॉन्च पर, जो एक पे नियर बाय की पहल है महिलाओं को समाहित बनाने और शक्ति प्रदान करने की दिशा में। आज हमारे लिए यह दिन है जब हम अपने समर्पण को पुनः प्रतिष्ठापित करते हैं जेंडर समाहित बनाने के लिए और इंश्योर करते हैं कि हम सब रोजगार के पक्ष में काम करें। सबसे पहले मैं सभी महिलाओं का स्वागत करती हूँ जो देश के अलग-अलग भागों से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जो अपने स्वरोजगार की यात्रा को शुरू कर चुकी हैं और अपने समाज में परिवर्तन की रचक बनने की इच्छा रख रही हैं। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। इसके अलावा हम स्वागत करते हैं हमारे ये अद्भुत पैनल के लिए, जो आज के विचार मंच में हमारे मार्गदर्शी रूप में होंगे। इस पैनल को मॉडरेट करेंगे आभा बकया जी, जो फाउंडर है लेडीज हु लीड की और एनडीटीवी प्रॉफिट, ब्लूमबर्ग, बिजनेस टुडे की पूर्व वरिष्ठ पत्रकार है। स्वागत है आभा जी आपका। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप चर्चा को शुरू करें और पैनल के बाकी सदस्यों का स्वागत करें। ओवर टू यू आभा। Thank you so much. And it's my pleasure to be hosting this fantastic panel today. We're talking about empowerment, and who better to do that than our esteemed guest. Joining us, Ms. Dhruvi Shah, Executive Trustee and CEO at Axis Bank Foundation. Ms. Rajshri Joshi, Program Director, BAIF Development Research Foundation. Ms. Swati Chaudhary, VP, Network Development and Advocacy, Women's World Banking, South Asia. Ms. Bharti Joshi, Chief Program Officer at Grameen Foundation, India. Ms. Nazim Sheikh, Associate Program Director at Swayam Shikshan Prayog. And Ms. Shilpa Rao, Lead Gender and Finance at RBIH. Along with all of these wonderful women, we also have Mr. Anand Kumar Bajaj, founder, MD, and CEO at Pay Nearby. It's wonderful to have you all together with us today. Thanks so much for joining us. Let me start with you, ma'am. Sorry, Abha, one thing, Anand couldn't join today, so I will fill in for him. All right, of course. Yeah, thank you. Yes, so Jayanti, as you all know, leads marketing at Pay Nearby, and it's great to have her on this panel, probably more apt as well, Jayanti. But let me start with Dhruvi, ma'am, and understand from you, what does empowerment mean to you at a personal level? And what do you feel that we can do in order to really uplift more women at the grassroots level? I think you might be on mute. It's a simple question, but simple questions are sometimes very difficult to answer. I've been thinking about what is empowerment. So one, it's a learning journey. It's a journey of self-empowerment and self-realization. And I've been fortunate enough to have opportunities that have equipped me to empower myself. And I think what I believe in, as a result of many things that have happened, I feel empowerment is about making choices. And it's also important to be able to take responsibility for the choices you make. And it's also about creating opportunities for others and create an ecosystem or a culture that is empowering for everybody, nothing to do with gender here, but empowering for everybody. So I think that's what empowerment means for me at a very personal level. Yes. Ms. Rajshri, let me bring you in as well. Let's get your take on it too. And also, what are some of the challenges that we find in order to really walk this path? While we all may have our own personal ideals on what it should be, what do you feel are some of the challenges that we come across? Let me get Rajshri in on this as well. Rajshri? Yeah, sure. So, so I think thank you for inviting me on this panel. And in terms of challenges, I think there are several challenges when we are talking about, in general, women entrepreneurship, and also mainstreaming women for various activities of economic empowerment. And I think the challenges are of like there are social, economic, technological challenges that are also there.
And I think there are several challenges of first generation entrepreneurs and nano entrepreneurs. So they have their own set of challenges. And in general, I think the access to technology, access to knowledge, and access to some of the resources is a major challenge I feel that women are facing. And especially this is true for rural women because they are staying in far-flung areas, and even the literacy is a problem there. Those are some of the challenges I think where a lot of work still needs to be done, and there's self-doubt also. But thanks to the SHG movement, and a lot of change has happened, but there is still long way to go. Right. Let me bring you in as well, Swati, and get a sense from you, because in the kind of work that you've done already, are you finding a changing narrative when it comes to empowerment? Are you finding that perhaps that, when you're looking at advocacy, that people are becoming a little bit more knowledgeable about what's required in order to really make a difference? So thank you, Abba. I think it was nice the way you started, because empowerment is quite personal, and if all of us have more nuanced definitions. But at Women's World Banking, when we look at empowerment, we're looking at we follow the Martha Chen framework of economic empowerment, and I'll just briefly touch upon it, because I think what it tells us is just two very basic lenses. One is in terms of resources, in terms of economic assets, and agency in terms of power and participation. And therefore, women through the continuum, how do we measure it? So, firstly, material change, change in income, assets, cognitive change in my awareness. Then it comes to perceptual change, how I view myself, and finally relational change in terms of my the difference in my financial, the decision making, the way I participate in that. So if you look at how women see themselves and how she's perceived, if you talked about what the overall perception is, I think the way I see it is that, in terms of the barriers, we always spend a little bit of time on them, but I think what we need to design for are this. As long as we design for her barriers, the solution will work for everybody. But somehow the converse is not true. So I think the shifting narrative, which is happening a little bit, but I think needs to happen more, is that we design for not just her scarcity, which we are currently doing, but designing for her potential. So it is about the opportunity, and how we don't overinvest in today's solution at the expense of tomorrow's possibilities. The reason why I say that is because it's all about what next. I mean, are we truly limiting ourselves? And I think that's the overall advocacy change. And I'll stop here. I know I changed your question a little bit, but I really wanted to. I'm interested. Describe for us what you mean exactly, and then we'll move forward. So it's about if I may interrupt for a minute, there are ladies, Sakhis joining us from all across the country. And if we could talk in a mix of Hindi and English, we probably will reach a wider audience. Sure. Sounds good. So I'll try. When I spoke about over investing in today's solution, so जो हमारी काफी बहनें हैं, उनकी करंटली हमने बात की कि उनके कितने बैरियर्स होते हैं, और जो हमारा जो सारा का सारा एफर्ट है वो हमेशा उन्हीं की तरफ, उन बैरियर्स की तरफ चला जाता है. तो इट इज सिमिलर टू there is a roadblock, let me make a flyover, but when we make a flyover, हमको कल की पॉसिबिलिटी कि कल कितना ट्रैफिक होगा उसके हिसाब से हमको फ्लाईओवर बनाना पड़ेगा, नहीं तो हमेशा we'll be playing a catch up game. So how do we design for her potential, and therefore not get limited by just solving for the barriers? Okay. Come to the potential then in just a moment, but let me first get everyone else in as well on those opening comments. Bharati, let me come to you, and आप बताइए, because आप तो बहुत आपका काम grassroot levels पे बहुत ज्यादा है, बहुत सारी ladies के साथ आप लोग काम करते हैं, उनको uplift करते हैं, उनको power देते हैं, तो आपको क्या दिखता है अपने काम में, and कितना improvement हो चुका है पिछले कुछ सालों में?
सो थैंक यू। एक्चुअली थोड़ा सा डिफरेंट मैं एक टेक दूंगी। पहले तो एज ग्रामीण हम लोग एम्पावर शब्द को उस तरह इस्तेमाल नहीं करते, Okay. क्योंकि द क्वेश्चन वी रेज इज हु आर वी टू एम्पावर others, right? That question we raise. So I think it's a matter of word, but all of us are on the same plane, but just word को मैं clarify करना चाहूँगी। इनफैक्ट जब भी फील्ड में हमारे टीम मेंबर्स के साथ, इवन हमारे ग्रास रूट वर्कर्स के साथ, लेडी वर्कर्स के साथ या कम्युनिटी के साथ इंटरेक्ट करती हूँ, तो उल्टा क्वेश्चन मैं पूछती हूँ, कौन किसके पास अभी ज्यादा पावर है? आई हैव अ जॉब, आई फील सिक्योर्ड, राइट? पर जो वुमन एंटरप्रेन्योर बनी है उसमें ज्यादा रिस्क लेने की कैपेबिलिटी है, मुझसे ज्यादा ड्राइव है, ठीक है? तो वो क्वेश्चंस हम हमेशा सामने रखते हैं। तो जहां वो हैं, जो अभी जो स्वाति ने बोला, ध्रुवी ने बोला, वो सब पॉइंट्स बड़े रेलेवेंट हैं। स्टार्ट फ्रॉम वेयर दीज वीमेन आर, कहाँ हैं, कहाँ वो जाना चाहती हैं और कहाँ तक जा सकती हैं, ये मैपिंग हमको क्लैरिटी पहले जरूरी है। बिकॉज सबका लाइफ स्टोरी, सबका विजन सेम नहीं है, और ये गलतियां हम लोग भी करते हैं, फिर भी सीखते हैं, फिर गिरते हैं, फिर सेम गलती भी करते हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि ब्रीफली ये कहूंगी कि ये इनेबलमेंट का एक्सरसाइज है कि कोई भी एंटरप्रेन्योर आज कहाँ है, कौन सा, जैसे एजेंसी की बात की, हम एजेंसी पर जब बात करते हैं, एजेंसी एक मोनोलिथ नहीं है, एजेंसी के काफी सारे अंदर न्यूएंसेस हैं। एजेंसी के कुछ एस्पेक्ट में मैं स्वयं वीक हूँ, कुछ एस्पेक्ट में वो एंटरप्रेन्योर मुझसे बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, कुछ में वो वीक है, शायद ये हमारा जजमेंट है। तो वो एस्पेक्ट्स को थोड़ा और ध्यान से पढ़ के, और वो कहाँ जाना चाहती हैं, कुछ एंटरप्रेन्योर्स चाहती हैं कि उनकी एक फिक्स्ड इनकम हो जाए, उसके बाद वो नीता अंबानी नहीं बनना चाहती, सॉरी टू टेक अ नेम, बट जस्ट दैट्स अ पॉइंट। सो नॉट टू ड्राइव द डेफिनेशन ऑफ एम्पावरमेंट फ्रॉम आवर साइड, बट ये समझना कि कोई महिला जो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ गई है, डिस्ट्रेस सिचुएशन है, या कल को वो एक्चुअली स्टार्टअप खोलने वाली है, खोलना चाहती है, खोल सकती है, ये एस्पेक्ट क्लैरिटी के साथ ही कोई भी काम हम लोगों को एज इंटरवेंशनिस्ट डू नो हार्म के व्यू से करना चाहिए, ये हम लोगों की सोच है। सो आई विल स्टॉप हियर, थैंक यू। No, it's lovely. I think it's super impactful. और इस पे हम तभी थोड़ा और बात भी करेंगे. But let me get Naseem, Shilpa, and Jayanti also for their comments. Let me go to Shilpa first. Shilpa, why don't you jump in here as well with your thoughts? Shilpa's gone. Naseem, Sorry, I'm back. She's back. Go ahead, Abha. Maybe Go I ahead. can do after Naseem. No No, no, worries. Sorry, please carry I on, had and then I'll connectivity issues. come to Naseem after that. Yeah. Great. Abha, I missed your question because I was switching from one browser to another. I was had asking you connectivity issues. for your Sorry, opening if you could comments. repeat. Just wanted you to jump in with your opening comments. Got it. In terms of how you view empowerment. And I think we've got Got a it. whole range of perspectives. Absolutely. So let's hear yours as well. Absolutely. So I think, look, everyone on the panel has already elaborated what empowerment means personally to them. So I won't get into that. And I think, I'm here more representing RBIH is at. So and maybe I will come in from the perspective of how RBIH thinks about empowerment of women, right? We as an institution have a very simple mandate. It's a one-line mandate. It's called frictionless finance for 1 billion Indians, right? And my mandate as somebody who leads the gender and finance vertical is frictionless finance for all women in India. And that's what I achieve to do in all of the projects, all of the work streams that I'm looking after. How do we ensure we give access to frictionless finance to women, so then they then can use the finance to do whatever they want to do. Again, it's not our job to define what is empowerment for them, but I think we do believe that access, usage, and quality of good finance is a stepping stone for any woman, for an entrepreneur, for a homemaker, for for somebody who's supporting their household. I think access to finance becomes very important. How do we define frictionless finance? It's three things. If we, through our work, can enable access to finance where she wants it, when she wants it, and however she wants it, I think we've done a small bit in ensuring that we are giving all the necessary tools for women in the last mile to then take and fly with it. So I'll elaborate maybe a little bit on that later. So that's RBIH's view. My view, just a very quick addition,
is I think ultimately it's to have agency in the choices that I make. It's not to be told what I need to do, what choices I need to make, whether I can work or not, how much I can spend, what I can buy. I think for me, empowerment is freedom and it's choice. So yeah, I'll stop there. Okay, lovely. Naseem ma'am, can we get you in as well? आपका क्या view? यस, मेरा ये मानना है कि एम्पावरमेंट मेरे लिए यह कॉन्फिडेंस की बात है। अगर हर किसी भी महिला में वो कॉन्फिडेंस है तो वो अपनी पूरे पोटेंशियल को, अपनी एबिलिटी को चॉइस, वॉइस और एक्सेस करने के लिए यूज कर सकती है। अगर उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस आना मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि विदाउट कॉन्फिडेंस हम कुछ नहीं कर पाते। और वो फैमिली के अंदर हो या वो बिजनेस के साइड हो, अगर जब तक हमें वो कॉन्फिडेंस नहीं है तो मैं ये मतलब बाकी सब चीजें इम्पावरमेंट में बहुत जरूरी है, एजेंसी वगैरह, लेकिन उस महिला को अपनी बात आगे रखने का कॉन्फिडेंस अगर उसमें है। Naseem, I think you went on mute by mistake. यस यस यस। तो मेरा ये मानना है कि empowerment is all about, for me, is confidence, and how that women use that confidence to access, make voice and choice for her social issues, or to address the social issues, as well as to earn make more money for her survival or for her family's survival. Jayanti, I'd love for you to come in as well, because you've been instrumental in putting this panel together, and I know that you're driven by a purpose at Pay Nearby as well. So, what does empowerment mean to you, and how are you living this mission? So first of all, a big thank you to every inspiring lady who's been a part of this panel. I mean, we are a young organization trying to make an impact in this space, and just the opening statements have been such a guiding light for us. Empowerment at Pay Nearby, the way we look at empowerment is the ability to make our own choices, right? If we can be participative, and I'll try and move to Hindi. I'm a typical Bengali who falters in Hindi, but I'll try and speak in Hindi. कि हर महिला अगर अपना डिसीजन खुद ले पाए और वो आर्थिक स्वच्छलता, वो आत्मनिर्भरता उसके पास हो कि वो जो डिसीजन लेना चाहे अपने लिए और अपने परिवार के लिए, वो क्षमता उसमें आए, उसको हम सही मामले में एम्पावरमेंट बोलना चाहेंगे। एज समवन सेड कि वो आज कहाँ है, कहाँ जाना चाहते हैं, उसका पोटेंशियल कितना दूर जाने का है, वो सब निर्भर करेगा अगर वो आत्मनिर्भर है और वो डिसीजंस खुद ले पाए। So for us, empowerment is the ability to generate employment for yourself and the ability to make decisions because you have the financial independence to make those decisions. And we also feel that a lot of the social evils today, जितने social evils आज हम देख पा रहे हैं, whether it is labor force में कम participation of women, whether it is mortality rates that are going up, whether it is adolescent infertility, a lot of this are driven because today women are not self-empowered, are not economically independent to make those major life decisions. तो अगर हम सही मामले में एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाए जो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल है, जो उनको वो क्षमता दे कि वो एजुकेशन, वो लिटरेसी, वो डिसीजन मेकिंग पावर अपने अंदर में लेके आ पाए, तो वो सही मामले में एम्पावरमेंट हो पाएगा। या Abha can't hear you. Sorry. I was saying lovely, and thank you so much. That was it's very beautifully articulated. Now let's actually get into the programs that you look at. And, if I could have examples from all of you in terms of some of the things that you've seen working on ground, कौन से programs का impact आपको दिखता है, जो आपको लग रहा है कि they've been productive and are worth expanding on. Any examples you can give us to describe the kind of grassroots impact that you've either been part of or have seen taking place
would be wonderful. So, Dhruvi, let me come back to you. I know you've been patiently waiting. So, maybe you could kick this off. It was lovely to hear everybody's perspective, and it's such an expansive topic. So in terms of work, what we've learned over the years is we support income enhancement for rural families. And we recognized very early on that women are a very critical part of rural livelihoods. So while we work with the family, a large focus is on the women. Men also migrate a lot. I think empowerment is an outcome of many things that happen, both economic empowerment and self-awareness and realization. And the effort has to happen on both sides. Just economic empowerment without realization, I don't think it creates that kind of empowering atmosphere in the village, and also for women. So collectivization of women through a common approach works very well, creating those enabling platforms, a lot of self-awareness trainings, capacity building, complemented by decision making on income generating that they are very integral part of. I think knowledge has been the biggest factor that, and these are stories that we hear from the ground, is these are stories that we hear from the men, is that our women now know more enough to teach us. It's a very, it's an indication that how the change in the position of women in the family, when recently heard that a woman said that my mother-in-law would not support me to do anything. But when a neighbor comes home to take my advice on agriculture or goatry, is when my family starts seeing me differently. And there are thousands of such stories, and I see Bharti smiling because she's also had similar experiences. And it's a combination of things, right? It's to create knowledge and create platforms, create knowledge, equip capacity building. So it's a combination of things, and it happens very fast with women. So you need to find those role models in the village. You need to find in any community, to be honest. And there are, like I said, there are many such examples, and we've learned over the years the exposure is very important, and more recently the exposure through access to phones and digital has been very fast. So things now happen fast, which is where your knowledge also has to imparting knowledge also becomes very important, so that you don't get into the wrong things, especially around financial inclusion and literacy. So that's what our experience around empowerment says. It's an outcome of many things, and it differs from place to place, so one cannot generalize it. It differs from community to community, location to location, and the experiences are wonderful, I would say. Very encouraging. Oh, okay. Please think of one anecdote for us, and we'll come back. Oh, I have many. Okay, so hold them in your mind. I saw both Bharti and Jilpa nodding, so let me come to them one by one. Bharti, why don't you first, share perhaps how you are seeing the impact on ground, and if you'd like to add to what we just heard from Dhruvi. So I think we have all had very many experiences. बहुत ज़्यादा diverse भी होगा. So we work in both semi-urban and rural areas. And experiences थोड़े differ तो करते हैं उसमें दोनों में. एक चीज जरूर impact करती है. One is because a lot of us are talking about working with women, on women. But एक चीज और हम लोग सभी काम करते होंगे वो है context पे. और ग्रामीण भी इसमें बहुत काम करता है, क्योंकि वो इकोसिस्टम स्टार्ट होता है women के घर से. आपकी कितनी भी कैपेबिलिटी हो, आप कुछ करना भी चाहते हो, लेकिन कहीं पर वो इवन अर्बन विमेन के पर कटते हैं, हम लोग कहते हैं. और वो जो इन्फ्लुएंसेस उनको घर पे होते हैं, चाहे वो इन लॉज भी हों, मेल फीमेल दोनों, ऐसा भी नहीं है सिर्फ मेन की तरफ से प्रेशर आता है. तो उस तरह के प्रेशर्स आते हैं विद इन द फैमिली. कितना महिला जा सकती है, साइकिल चला सकती है, नहीं चला सकती है, दूसरे के घर में सामान बेचने जाएगी, या दूसरा कोई घर का व्यक्ति हमारे घर में उससे सर्विसेज, कोई डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लेने आएगा, अलाउड है नहीं अलाउड है, बहुत सारी चीजें होती हैं. तो वर्किंग एंड एंगेजिंग विद हाउस होल्ड मेंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है. हमने ये प्रोग्राम्स में देखा है. उसके बाद आप नेक्स्ट लेवल पे चलते जाते हैं, गांव के लेवल पे जाते हैं, वहां भी गांव में भी फिर जो कस्टमर्स आएंगे सर्विस के लिए, वो भी किसी ना किसी बायस में रहते हैं. उसकी बहू के यहाँ जाना है, उसकी बहू से फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कराऊं या नहीं कराऊं,
या जिस लड़के से कराता हूँ उससे ही कराते रहूं? तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न आते हैं। तो उस इकोसिस्टम पे, जो एक बिल्कुल उसका इंटीमेट इकोसिस्टम है विमेन एंटरप्रेन्योर्स के साथ, उनके साथ काम करना साइमल्टेनियसली जरूरी होता है। सेकेंड है, बहुत सारे मार्केट प्लेयर्स हैं जो कि हो सकता है फ्रेंचाइजी देने वाले हों, ठीक है, कोई इनपुट सर्विस प्रोवाइडर हो जो विमेन के साथ वैल्यू चेन में हम कहते हैं काम करे। उनको भी माइंडसेट टू वर्क विद विमेन, टू टेक समटाइम्स ऑर्डर्स फ्रॉम विमेन बिकम्स इंपॉर्टेंट। देन पॉइंट आता है कि विमेन इन द होल मार्केट प्लेस, उस मार्केट प्लेस में वो महिला अकेले नहीं है, अनटिल वो सिर्फ एक लोकल गांव में ही उस प्रोडक्ट्स केटर करती है। तो पूरी वैल्यू चेन में जितने भी एक्टर्स हैं उनको एक तरह का जैसे कॉन्स्टेलेशन होता है वैसे आपको पूरा फिटिंग करना पड़ता है। ये हम लोग प्रोग्राम में करते हैं कि अगर ये एंटरप्रेन्योर है, इसको इनपुट्स के लिए इस तरह के सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ काम करना है, तो उनका एंगेजमेंट, आउटपुट्स यहाँ जाएंगे तो उसका वेयर हाउसिंग से लेके ट्रांसपोर्ट सारा देखें। फिर एक पॉलिसी रेगुलेटरी इंटरफेस है, गवर्नमेंट की स्कीम्स है, कौन सी से उसको फायदा मिल सकता है। तो ये पूरे एस्पेक्ट पे एज अ पूरा सौर मंडल की तरह काम करने से ही कुछ काम आगे बढ़ता है, ऐसा हमारा एक्सपीरियंस है। और वुमेन के लिए जहां तक एंटरप्रेन्योरशिप का है, ये मैं छोटा सा एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। रूरल एरियाज में हमने देखा है कि एक होता है कि हमारा सैंक्शन प्रपोजल, 5 ट्रेनिंग, 6 बजे से या 4, हम शाम को भी करेंगे तो आना है, 2 घंटे 4 घंटे आपको काम करना है इतने घंटे। बट वो उनकी एंटरप्रेन्योरशिप सक्सेस की डेफिनेशन नहीं है। उसके लिए है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम, वो वैसे ही टाइम पुअर है, अगर हम उसमें भी उसको बांध देंगे प्रॉब्लम होगा। सो उनका क्या कंट्रोल ओवर टाइम आ रहा है, कंट्रोल ओवर चॉइस ऑफ कस्टमर्स, प्रोडक्ट सर्विस। आप कहेंगे यही यही प्रोडक्ट बेचो, सैनिटरी नैपकिन हमने ई कॉमर्स में डाला है, वो कहेगी नहीं मेरे को ये नहीं, मेरे को ये प्रोडक्ट से डील करना है। जो हम लोग अपने प्रोजेक्ट के स्ट्रेट जैकेटेड उसमें कभी कभी हैंडल नहीं कर पाते। तो कैसे हम वो फ्लेक्सिबिलिटीज सोच कर कि ये चॉइसेस, इट्स ऑल अबाउट, सही कहा स्टार्ट में जो कॉलीग्स ने कहा, इट इज ऑल अबाउट गिविंग हर चॉइसेस, टू अलाउ हर चॉइसेस, टू गिव स्पेस, अलाउ हर टू डिजाइन हर ओन प्रोग्राम। तो वो एक चैलेंज है, हम लोग भी उससे स्ट्रगल करते हैं, लेकिन आई थिंक दिस इज हाउ वी कीप लर्निंग एंड मूविंग फॉरवर्ड। सो आई विल स्टॉप हियर। Okay, Shilpa, let me get you in as well. On the, how are you seeing things on ground? And if you can also give us examples of really how some of these programs can be transformative. No, absolutely. Thanks, Abba. So inspiring to hear, from everybody here. In my work in the past 1 year, I've focused on gender and finance and how to, use finance as almost like a catalyst in a woman's development journey and growth, right? So that's kind of been my lens. And, the more field research we do, the more women we meet, the more we spend time on the field and understand these micro and nano entrepreneurs. One realization that's come to all of us is that they are rock stars. They are rock stars. They don't need much from you. Just all they need is a system which enables them to empower themselves in as little friction and with as little friction as possible, and then they will do the rest. So we really need not do much other than unlocking certain barriers and certain issues which exist in the system today. I'm talking particularly from an access to finance perspective, right? And in this, the one movement which inspires me every day and all of us every day to come to work is the self-help group movement, and the 100 million women nano entrepreneurs that exist on the ground today, and the actual impact this massive rural infrastructure has in the last mile. We were seeing statistics the other day. It works out to something like 20% of all adult women in India belong to SHGs. That's the power of the movement. It's been around for 30 years, and it's done wonders in terms of providing access to mental health channels for women to get together and talk about things that bother them. So I think the SHG movement is something that we believe is one of the strongest pillars. It already exists, and the more we can do to empower this movement, I think the more we can do to really empower women in the last mile. And we as RBIH have put on a technology and innovation hat in order to do that, because being an innovation hub, I think we lead with the aspect that what can tech really do to unlock magic and access and usage and quality of financial services in the last mile. So we've actually been working with a bunch of banks, public sector banks, to see how we can now
take a movement which is already working very well, but provided wings to fly higher, so that today if it's 100 million women, in this movement, how can we take it to 150 or 200 million? And how can we unlock access to credit from banks, which, by the way, is the cheapest form of credit available to women and nano entrepreneurs today at 3%, right? So we are very bullish about this segment and the potential it has to transform India in the last mile. And that's why, you also hear the 2 crore Lakpati Didi Nara, which Prime Minister Modi is now speaking about. So a lot of our efforts internally are focused on what can we do to take these women, increase, first of all, this 100 million to 200, and then ensure that, they get more access to credit, more access to services, and more ways to sort of organize themselves and fly. Yeah. No, I think it's brilliant. I think we've covered, of course, the fact that all of you are doing your bit to run programs to uplift women, but what's also coming through in this conversation is the number of women who genuinely want to be entrepreneurs and want to be empowered and want to be financially independent. And I love the statistic that you gave, 22%, because that's phenomenal. It just shows you of the kind of power that this base has in our country. Rajshri, if I could come to you as well and, understand a bit more about your program that you run and the kind of advocacy that you do, and, really how you feel enabling more such women will create a corresponding impact when it comes to the economy, when it comes to growth. Are we already seeing that momentum? Yeah. So, thank you, Abha. And I would be reflecting upon the kind of work that BIOF has been doing. So, BIOF is almost 5 decades we are in the field, and we have more than 4,000 SHGs that we are working with across India. And we consider women as equal partners in development. And most of our work, even before we started talking about entrepreneurship, our focus is on livelihood creation. And I think that is very important because in India, it is essentially family farming. And I think Bharti ji spoke about the context. So even we have to align our work to changing context. So and most of our work is in rural areas or tribal areas, and even that region is undergoing lot of changes when it comes to context. Like lot of digitalization is there. Now government schemes are there like SRLM, NRLM schemes are there. Also, the service based kind of requirements are there from entrepreneurship point of view. Also, there is a scope for lot of new and green jobs or green entrepreneurship, in rural areas also. Those boundaries are getting thinner, like when we are talking about urban and rural. So that context is also there. So in the light of that, BIOF has introduced several such models focusing on farm women, especially because the moment we start talking about entrepreneurship, I think the focus is on urban kind of women. But I think even in rural areas and even farm women can become good entrepreneurs. And we have several such examples. I think what has worked for BIOF is one is we have built upon their inherent knowledge systems. For example, we have worked with tribal women, and we have shown an entrepreneurship model where they are selling the seeds of indigenous vegetables. And this is something only tribal women can do because they have very good knowledge about the traditional seeds, indigenous seeds. So now they are earning in lakhs, and their seed packets are being sold like hotcakes. So that is the kind of example we have set. Even we have set example of e-dost, and today morning only we had this meeting with RBI Innovation Hub. So where this is an important cadre, because in far-flung areas, the banks have still not reached, and there is this last mile service that is required. So we have worked on Aadhaar-enabled payment system, and again, thanks to this Aadhaar-based kind of system that government has introduced. So I think that has opened up several possibilities. So it is not only the banking system, but there are several other services that these women are providing through their mobile and through the Aadhaar-enabled payment systems that we have introduced. So these possibilities
possibilities are there. There is a cadre of Pashu Sakhi, Krishi Sakhi we are all aware of, and this is a service-based kind of entrepreneurship that is possible. The last example I will give is in Gujarat. We have started something called Nahari, which is indigenous cuisine corners, and these are again the food system related knowledge that these women have. So what I'm trying to say is there are a lot of things that are undergoing changes in rural areas. There are several opportunities for entrepreneurship when we are talking about farm, off farm, and non-farm type of livelihoods or entrepreneurship. And there is an ecosystem of, by way of like digital ecosystem, government pro women policies like this Lakpati Didi that Honorable Prime Minister Sir has introduced. And I think there is an ecosystem by way of private players also like yours, Abha. And I think the very good startups are also there. So I think there is a need for not to work in silos, but join hands together and introduce these PPP type of models where different technologies can be provided by you people and we can take it. And I think technology has very important role to play when it comes to speed and scale. And that is what we are seeing. So I will stop here with this. I think others will also contribute. I love how all of you are adding your own unique perspective, and each each comment is really helping to bring out the layers and the depth of the amount of work and impact that you're creating. And I think that's really important. Naseem, let me bring you in as well. Naseem's already ready. She's already unmuted herself. She's like, I'm the last one left. Please go ahead. हमारे केस में जैसे स्वयं शिक्षण प्रयोग ये महिलाओं के साथ महिलाओं के लिए ही काम कर रही है, और हमारा ये मानना था कि जब तक महिला इकोनॉमिकली एम्पावर नहीं होती, उसके सोशल कंडीशन या उसकी जो सोशल व्यवस्था है समाज में वो चेंज नहीं होती। और जैसे सभी भारतीताई ने बताया, उसका इकोसिस्टम उसके फैमिली से शुरू होता है। जब तक उसके फैमिली मेंबर्स उसको रिस्पेक्ट नहीं करेंगे या उसके फैमिली मेंबर्स उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, तो बाहर का कोई नहीं सपोर्ट करेगा। और ये भी हुआ है कि जो महिला को घर में उसके पहचान नहीं है, उसको It's gone on mute again. एम्पावरमेंट के काम में जब वो इन्वॉल्व होती है, जैसे वो कोई लाइवलीहुड शुरू करती है या सेल्फ एम्पावरमेंट के लिए कोई एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोग्राम शुरू करती है, तो उसकी जब समाज में पहचान होती है, उसके ग्रुप में पहचान होती है, तो फिर घर में भी उसका स्टेटस चेंज होता है। तो ये टू वे प्रोसेस है कि कभी कभी घर से शुरू होता है इकोसिस्टम, कभी कभी कम्युनिटी से शुरू होता है। तो हमको कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से उसकी जो जिंदगी है या उसकी जो परिस्थिति है, उसके हिसाब से हमको प्रोग्राम करना पड़ता है। तो हमने हमारे केस में स्वयं शिक्षण प्रयोग में हम ये दोनों इकोसिस्टम को बनाने की कोशिश की है कि वो किस तरह से अपने घर में, अपने समाज में, और जो जो अदर स्टेक होल्डर्स है, जैसे पंचायत है, सरकारी अधिकारी हैं, बैंक है, उनके साथ वो किस तरह से काम करेंगे। और ये सब करने में उन्हीं के गांव से कोई रोल मॉडल महिला आगे आके उनको हेल्प करेगी, तो वो बहुत ज्यादा ही मतलब एक बहुत ही इम्पैक्टफुल ये है कि हर गांव में अगर लीडर्स खड़े हो जाएंगे तो वो 10 नए महिलाओं को हैंड होल्ड कर सकते हैं, हर 10 नए महिलाओं को सपोर्ट कर सकते हैं। तो जैसे हमारे यहाँ हमने फॉर्म और नॉन फॉर्म में शुरू किया था, लेकिन आज हमारे थाउजेंड्स ऑफ वीमेन कलेक्टिव्स में है वैल्यू चेन, एग्रीकल्चर वैल्यू चेन। क्योंकि आज सबसे बड़ा जो मसला है वो क्लाइमेट चेंज और क्लाइमेट अपना सबसे जो बड़ा मसला है वो क्लाइमेट चेंज का है और फूड सप्लाई सिस्टम का है। और हमने कोविड से भी बहुत सारा सीखा कि अगर हम थाउजेंड्स ऑफ वीमेन को एम्पावर बनाना चाहते हैं, इकोनॉमिकली एम्पावर करते हैं, तो एग्री वैल्यू चेन ही है जहाँ पे हम बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके कलेक्टिवाइजेशन करके सप्लाई सिस्टम स्ट्रेंथन कर सकते हैं। और वीमेन लेड सप्लाई सिस्टम को बनाने के लिए एक पूरा हमको काम करने की जरूरत है, क्योंकि वही एक जगह है जहाँ पे हम बहुत सारे महिलाओं को इंटीग्रेट कर सकते हैं। जैसे हमने अभी 6-7 वैल्यू चेन स्ट्रेंथन किए हैं कलेक्ट वीमेन फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी बना के, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर का भी एजेंडा है। लेकिन यहाँ पे हमने जैसे वेजिटेबल कल्टीवेशन करके उसको फ्रेश वेजिटेबल्स मार्केट में लेके जाना,
मिल्क में मिल्क एग्रीगेशन, प्रोडक्शन एग्रीगेशन, और फिर उसको मार्केट में लेके जाना या उसके वैल्यू एड प्रोडक्ट्स बनाना। सिमिलर वे में जैसे अभी हमारा भारत भर में पूरे पूरा कंपटीशन ये क्रिएट हो गया है कि हम अभी तक जितना भी हमने केमिकल्स फर्टिलाइजर्स को यूज करके एग्रीकल्चर किया है, तो अभी हम एग्रीकल्चर को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम किस तरह से ऑर्गेनिक प्रोडक्शन की तरफ जाए। तो ऑर्गेनिक इनपुट्स किस तरह से महिलाएं प्रोडक्शन करेंगी अपने गांव में, और वो एक सप्लाई सिस्टम में काम करेगी, तो वो भी हम कर रहे हैं। तो एन अपॉर्चुनिटीज आर देयर, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन उनको उनको एक इनाबलिंग इनाबलिंग इन्वायरमेंट देना और इकोसिस्टम को कनेक्ट करने का जो फैसिलिटेशन का रोल है, हमारे जैसे आप जैसे सब लोग मिलके अगर हम करेंगे, तो डेफिनेटली विमेन इकोनॉमिकली एम्पावर भी हो जाएंगे, और हमारे देश की जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसको भी चेंज करने में वो सबसे बड़े स्टेक होल्डर का रोल प्ले कर सकते हैं। Absolutely. Exciting. It's a very exciting time. Chaitri, would you like to add anything here in terms of, the kind of role women can play in the economy? And maybe share a few things that we are also doing. फर्स्ट ऑफ ऑल विनती है सबसे, अगर हम हिंदी में बात कर पाए, क्योंकि काफी सखी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिनको हिंदी में समझ आएगा, तो इट्स एन इशू विद मी आल्सो, बट आई एम ट्राइंग माय बेस्ट टू बी इन दैट लैंग्वेज। देखिए, मतलब काफी जन हमने सभी ने बोला है कि हम मानते हैं कि इकोनॉमिक एम्पावरमेंट एक बड़ा हिस्सा है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, राइट। द एबिलिटी टू मेक अ चॉइस वो तभी आता है जब हम फिनेंशियली इंडिपेंडेंट हो और वो चॉइस ले सके। और हम सब जो इस स्पेस में काम कर रहे हैं टुवर्ड्स मेकिंग वुमेन फाइनेंशियली एम्पावर्ड, हमें वो 3-4 चीजें जो भारती मैम ने कहा, मतलब इट जस्ट फिट्स राइट इनटू इट, राइट। कि आज के दिन में जो वो रूरल लेडी है वो ऑलरेडी 1000 काम खुद कर रहे हैं, ठीक है। तो वो 1000 काम में वो आप उनको और एक काम बोल रहे हो, भले ही वो 1000 काम नॉन पेड काम है, पर वो पेड काम जो वो आप उनको दे रहे हो वो 1001 काम है उसके लिए। तो द कन्वीनियंस ऑफ टाइम कि वो अपने हिसाब से वो कर पाए, वो एक बहुत बड़ा चीज है कि हम उसको ऐसे सॉल्यूशंस दे जो वो अपने हिसाब से अपने टाइम जब हो तब वो काम कर पाए। ऐसा काम दे जो वो अपने अपने घर से कर पाए। Sometimes, and we all spoke about it, right, that going outside the home is a limitation, कि इनकम जो अपॉर्चुनिटी एनहांसमेंट अपॉर्चुनिटी है, अगर उसको घर से करना है वो काम कर पाए। And the third thing that she mentioned, which also fits the bill, that let's not force a product on her, कि वो choice of product भी वो खुद ढूंढ पाए कि हाँ मेरे पास वो choice है, मुझे बैंकिंग देना है तो मैं बैंकिंग दूं, मुझे ई कॉमर्स देना है तो मैं ई कॉमर्स दूं, मुझे जो सही लगे और जो मेरे एरिया में मुझे नीड लगे उस हिसाब से मैं लोगों तक वो काम पहुंचा पाऊं। तो आई थिंक, आई मीन लाइक शी सेड, आई मीन वी जस्ट इट स्ट्रक अ कॉर्ड विद अस बिकॉज प्रिंसिपली दिस इज व्हाट वी स्टैंड फॉर। हम क्या बोल रहे हैं कि हमारे साथ जो महिलाएं जुड़े हुए हैं, और हमने लास्ट कुछ सालों में 2-3 सालों में काफी काम किया है इस स्पेस में। तो वी वर्क विद अ लॉट ऑफ यू state livelihood missions, whether it is in Uttar Pradesh, Rajasthan and elsewhere. We have over 10,000 women who work with us. 10,000 से ज्यादा सखियां आज हमारे साथ काम कर रहे हैं। 750-800 करोड़ के बिजनेस हम साल भर कर रहे हैं, जहाँ पे इन सखियों को 10-15 हजार कमाई हर महीने हो रहा है, ठीक है। पर ये करने के लिए हमने जो सीखा है कि जो मैम ने बोला है कि हम उसको एक ऐसे आसान समाधान दे जो वो अपने घर से कर पाए, अपने टाइम पे कर पाए, अपने मन चाहा सामान वो चूज कर पाए। तो that is what we stand for. And in terms of the personal anecdotes, there's a lady from UP, and she's one of the ladies who's doing very well in our ecosystem. So when she came to our system, us time pe, she was a single mother, and we met her, and she had 2 small kids, and she didn't know the way forward for her because, you know, societal barriers, how to set up a shop, all of that were new to her. But today she is earning more than 15-17K a month. She is sending her children to school. So she's been able to absorb that economic shock that came her way suddenly. And that is the power of the system, right? हम ऐसे कैसे समाधान दें जो सहज हो, जो उनको फ्यूचर के लिए रेडी कर पाए, ठीक है। And you know, in a few minutes we will probably be launching the Digital Naari App.
So we've been working in this women empowerment space for a while. Our endeavor is to now create an umbrella, a brand that is focused to work towards that end. And we have had some history, we have had some learnings that we want to now implement. Like you all said, 22% in the SHG groups, right? We would want to work with partners like you. We have a solution. We need your strength, we need your distribution now to reach out to as many women, क्योंकि हमारे साथ काम करने के लिए उसको बस एक मोबाइल चाहिए, उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए. उसके बाद जो भी चाहिए उसको कन्वीनियंस ऑफ टाइम चाहिए, उसको कन्वीनियंस ऑफ प्रोडक्ट चाहिए, उसको कन्वीनियंस ऑफ स्पेस चाहिए, घर से काम करने सभी कुछ उसके चॉइस के हिसाब से वो कर पाएंगे. पर वी नीड पार्टनर्स लाइक यू to start working with us so that we can reach the last mile and empower this woman to a more empowered journey. Wonderful. Thank you so much, all of you. I'm afraid Shilpa has a question, I think. Someone has a question? No, it's not a question. In fact, if I may add an interesting anecdote as well. I think, if I were to look back in the last year, what's the best memory I have of a good Instagram reel? वो जो, let me speak in Hindi actually. सबने देखा होगा वो आंटी जो ड्रेस मटेरियल बेच के बोल रही थी, सो ब्यूटिफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, राइट? फॉर मी, वी हैड अ डिस्कशन इन द टीम द अदर डे, वो हमारे कस्टमर है. उन जैसे महिलाओं को जिसमें हसल है, जिसमें विल टू परफॉर्म है, जिसमें enthusiasm है, उनको हम एम्पावर कैसे कर सकते हैं फाइनेंस से? That's the one lady who comes to mind when I think of an anecdote. She is I think a very good representation of most nano entrepreneurs and women entrepreneurs in India. They're amazing. They just need enabling factors and to sort of help them go from 0 to 100. Yeah. I just wanted to add just one last thing from just from the opposite side. हम हमेशा बात करते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में मेकिंग फाइनेंस वर्क फॉर वुमेन, मेकिंग टेक्नोलॉजी वर्क फॉर वुमेन. आप देखिए कितना बड़ा मार्केट है ये फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए, बाकी इकोसिस्टम प्लेयर्स के लिए. सो वी नीड टू डू अ बिट. वो तो अनटैप्ड गोल्ड है. वी नीड टू वर्क टुवर्ड्स मेकिंग श्योर दैट the economic benefit that can accrue to financial service providers to the larger ecosystem is there. जब हम public sector banks के साथ काम करते हैं, so like the opportunity they can unlock is 25,000 crores worth of savings. Now, please make it work for them. Don't expect them to change, them to learn things. So I just wanted to just bring that they are the untapped goal, and we need to work towards making sure that they use our services. Naseem, Bharti, anyone else wants to jump in with a closing comment? Yes, Please feel yes. I want to say मैं अर्चना के बारे में बताना चाहती हूँ जो हमारे नेटवर्क से है. उनकी जब वो प्रोग्राम में आने के पहले उनकी जो सिचुएशन थी, शी इज लाइक 10 रुपये के लिए उनको दूसरों की तरफ देखना पड़ता था. लेकिन जैसे जैसे उनको ये अपॉर्चुनिटी मिली, ट्रिगर मिला, और जो भी नॉलेज उनके अंदर जो पोटेंशियल था उसको बाहर निकालने की संधि मिली, तो वो सबको इकट्ठा करके जो इंटरप्राइज या जो भी लाइवलीहुड एक्टिविटी उन्होंने शुरू किया गांव के कॉन्टेक्स्ट में, वो आज उनको CII का एग्जाम्पलर बना दिया है. और अभी वो 5,000 महिलाओं को स्पाइरल जर्नी है उनकी खुद की जो जर्नी है एज ए एंटरप्रेन्योर लीडर, वो दूसरों को सिखा रही है. और साथ में साथ खुद के घर में छोटी सी लैंड साइज के ऊपर लैंड ओनरशिप के साथ वो थाउजेंड्स ऑफ हर मंथ में वो 50,000 से ज्यादा पैसा कमा रही है और दूसरों के लिए एक रोल मॉडल का काम कर रही है. तो मुझे लगता है कि हमारा एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एज ए स्टेक होल्डर, हमको वो फैसिलिटेशन करने की जरूरत है कि वो किस तरह से जो डॉट्स को कनेक्ट करेंगे और जो भी अवेलेबल है उसको किस तरह से हम महिलाओं के लिए एक्सेस करा के देंगे कि जिससे वो इकोनॉमिकली और सोशली एम्पावर हो जाएंगे और वो अपनी कम्युनिटी को लीड करेंगे. All right. Ruby, Ashri, any other closing comments? Sorry, were you saying something, Naseem? I'll just say one thing कि क्योंकि ये थोड़ा सा हमारा कॉन्वर्सेशन डिजिटल उस पे भी था. वी वर्क अ लॉट ऑन डिजिटल पाथवेज फॉर वुमेन इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन. तो बेसिकली डिजिटल ऑनबोर्डिंग में हमें डिफिकल्टी नहीं आती. मैं शेयर करना चाहूँगी कि विमेन का ग्रास्प जो है बहुत फास्ट होता है.
उस साइड पे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। एक वुमन ऑन एन एवरेज इन इंडिया में, हम लोगों ने जहाँ जहाँ स्टडी किया है, 100 से ज्यादा टास्क अपने 16 से 20 घंटे में करती है। 100 से ज्यादा डिफरेंट टास्क इन अ डे। तो अगर इतनी कैपेबिलिटी वाली वुमेन एक मोबाइल और मोबाइल बेस्ड प्लेटफॉर्म आराम से हैंडल समझ सकती है जल्दी। सबसे ज्यादा कंसर्न हमें रखना पड़ेगा साइबर फ्रॉड पे, क्योंकि ये एक एस्पेक्ट है जिसमें हम लोग भी फेस कर रहे हैं कि उनकी अवेयरनेस, उनकी सुरक्षा। क्योंकि जितनी जल्दी हम भी देखते हैं, अगर जितना हमारा डिजिटल मनी होता है उतनी जल्दी बाहर जाता है। जितनी चीजें, जितनी एसेट्स डिजिटल होंगी उतनी उनके गायब होने की क्षमता भी बढ़ जाती है और वो अननोन में घूम चले जाती है। तो वो एक एस्पेक्ट मैं जस्ट फ्लैग करना चाहूंगी कि वो एक एस्पेक्ट है जिस पर सबको मिलकर काम करना है। अदरवाइज फ्रॉम वुमेन साइड दे आर रेडी। So, just adding to Abha, what yeah, sorry. sorry. So just adding to what Bharti ji said, I also wanted to add that even we have to take care of not encouraging digital divide. So because the moment we talk about technology, moment we talk about smartphone, I think there is also a kind of probability that it will lead to digital divide, because the technology और women इनके बारे में काफी सारे हंसी मजाक किया जाता है। नॉर्मली स्मार्टफोन है तो वो बच्चे को दिया जाता है जो कॉलेज में पढ़ने वाले हैं। तो आई थिंक ऑल दीज इकोसिस्टम में ये भी बातें हमें इंश्योर करनी पड़ेगी। Naseem, were you saying something? मुझे ये बोलना था कि अभी स्वाति जी ने बोला कि उनको 1,000 काम पहले से ही है घर के, और उसमें एक एडिशनल हम एम्पावरमेंट वाला और स्पेशली इकोनॉमिक एम्पावरमेंट का काम हम उनको दे रहे हैं, तो वो हमको सोचने की जरूरत है। लेकिन मैंने जहाँ तक एक्सपीरियंस किया है मेरी लाइफ जर्नी में एसएसपी के साथ मिलके, जब महिलाएं इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होते हैं तो वो 4 काम दूसरों को दे देते हैं, अपने घर के लोगों को या उनके फैमिली के मेंबर्स को। तो हमको ये डाउट किए बिना महिलाओं को इकोनॉमिक एम्पावरमेंट करना बहुत जरूरी है। Dhruvi, closing comment, and then I'll hand over to No, Jayatri. it's been really nice to hear a lot of these stories, and the common link that I've been able to understand, two things which are from a very future perspective. I think in all the conversation around empowerment, I think digital needs to also find a good footing. We are already doing a lot of work, but I think one needs to be a little more conscious, especially I'm also talking about us, both in terms of equipping, enabling, but also building literacy around all the possible frauds that can happen. I think both sides are very important to factor in while we build capacities in our own, each of our own work. That's about it. Thank you so much. And it was just so wonderful to see how passionate all of you are about your work, and to hear some of the anecdotes of how this is really moving the needle on ground. Thank you for your time and for joining us today. And with that, Jayatri, I'll hand over back to you. Thank you so much. Thank you, Abha, for moderating this session for us. It was a real pleasure. And thank you to all the inspiring ladies. Like I said at the starting, we are a young organization wanting to make our impact in that space. And your guidance has really been a lot of help, motivation, and we truly appreciate it. In closing comments, like Bharti ji has said, कि ये जो सखिया है उनको ग्रास्प करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ यू टीच देम दे विल ग्रास्प इट इजीली, राइट? एंड लाइक स्वाति सेड, it is an untapped gold, right? They're waiting for us to go and help them out there. That opportunity is waiting for us to explore. तो हमारा भी, and our CEO who unfortunately couldn't attend today, Anand, keeps on saying कि 50% of the gross domestic reserve जो है वो हमारे women hai, and let's unlock the potential to take India to the next level. So thank you so much for your insights, and let's all work together. Like I said, we are looking forward to work with each of you towards our goal of making more Lakpati Didis, of ensuring that each woman have the power to decide her own future, to make her own living. Thank you once again. And with that, I would like to call Alok Jha, who leads our livelihood mission program, to launch the Digital Naari App. Thank you so much once again. Thank you, Jayatri. Thank And it was so lovely to see all of you, because, as they say, one woman empowered stands for all the women. Okay, and
18%, I was reading a CII report, is 18% of GDP is contributed by women today. And imagine if this increases, it expands quite a bit. But it was lovely to see everybody talking about empowerment built through self-reliant. Self-reliance comes through the confidence. Confidence comes through enablement, and enablement comes through the financial liberation. And that is where पे नियर बाई जो है आज की तारीख में हम लोगों ने बहुत काम किया इसमें पिछले 1-2 साल में हमने स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन के साथ काम किया, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के साथ काम कर रहे हैं हम लोग अर्बन लाइवलीहुड मिशन के साथ भी काम कर रहे हैं आरबीआई इनोवेशन हब के तरफ से फ्रिक्शनलेस सेविंग के लिए भी उन्होंने हम साथ में मिलकर काम कर रहे हैं और इन सब का समन्वय जो है एक बहुत बढ़िया हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया, डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जिसको हम डिजिटल नारी कहते हैं। ये सारी वुमेन को समर्पित है और हम चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस ऐप को के द्वारा लाइवलीहुड अपनी बढ़ा सके, फर्स्ट इनकम या सेकंड इनकम जैसी भी हो। इसमें हमने बहुत सारी सर्विसेज इकट्ठा कर रखी है, like all of you said, it is all about choices, right? So they can choose जो उनको comfortable है, बैंकिंग से लेकर के, ट्रैवल से लेकर के, ई कॉमर्स से लेकर के, इंश्योरेंस से लेकर सारी तरह की सुविधाएं उसमें बिल्ट इन है। तो वो ऐप डाउनलोड करके और जो है वो अपना कार्य शुरू कर सकती है। जैसे गायत्री ने बोला, it is very simple. So I hereby launch the Digital Naari App with you and with just one reel which I would like all of you to see. आप सब देखिए इस रील को, ये सशक्तिकरण का एक बढ़िया वीडियो है। पे नियर बाई के डिजिटल नारी ऐप के साथ बैंकर दीदी बनके लखपति दीदी का सफर शुरू करें। भारत सरकार की लखपति दीदी पहल को साकार कर रहे हैं भारत के सबसे बड़े भरोसेमंद नेटवर्क पे नियर बाई। डिजिटल नारी ऐप के साथ अब महिलाएं अपने क्षेत्र में आवश्यक बैंकिंग और डिजिटल सेवाएं आसानी से पहुंचाकर लखपति बनने का सफर तय कर सकती हैं। भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन के तहत पे नियर बाई को आजीविका मिशन चलाने की अनुमति मिली है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और कई अन्य राज्यों में आजीविका योजना के तहत लाखों महिलाएं डिजिटल नारी ऐप से सशक्त बन रही हैं। इस ऐप के साथ आप बन सकती हैं अपने एरिया की बैंकर दीदी, जहां आप नकद निकासी, बैंक अकाउंट खोलना, मनी ट्रांसफर, रिचार्ज, बीमा, लोन्स और ई कॉमर्स जैसी महत्वपूर्ण सेवाएं लोगों तक आसानी से पहुंचा सकती हैं। पे नियर बाई एनपीसीआई और कई बड़े बैंक्स जैसे यस बैंक, एक्सिस बैंक, आरबीएल, इंडसइंड का भरोसेमंद साथी है। पे नियर बाई के साथ जुड़े हुए 7.5 लाख से अधिक दुकानदार लाखों की कमाई कर अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक ले जा रहे हैं। आप भी लखपति दीदी बनने के लिए अपने फोन से पे नियर बाई डिजिटल नारी ऐप डाउनलोड करें और आर्थिक आत्मनिर्भरता के साथ समाज में एक नई पहचान बनाएं। थैंक यू सो मच। आई थिंक ये जो वीडियो है सारे डिस्कशन को जो मैं कहना चाह रहा था उसको समराइज कर देता है और इससे हम उम्मीद करते हैं कि हमारी जो जर्नी है, हम कुछ आप लोगों के साथ काम भी कर रहे हैं, जैसे भारती जी के साथ हम बहुत जुड़ के काम कर रहे हैं, आरबीआई एच के साथ हम काफी जुड़ के काम कर रहे हैं, स्वाति जी के साथ भी हम एक पोर्शन पे काम कर रहे हैं। तो हमारा लक्ष्य जो है 10 लाख महिलाएं को सशक्त करना, उस मिशन में आप सबके साथ हम आगे बढ़ेंगे। और मैं आई विल इनवाइट शिल्पा टू गिव द closing comments on this program. Thank you so much. Thank you, Alok. No, it's really nice to see
के सॉरी मैं हिंदी में बात करती हूँ, मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, प्लीज फॉरगिव मी, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल इस पैनल को ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत अच्छा लगा. इन सब महिलाओं को सुन के बहुत इंस्पिरेशन मिला मुझे भी, और बहुत अच्छा लगा कि ये इनिशिएटिव फाइनली लॉन्च हुआ है. And I really hope that it takes off. It helps in increasing the number of women BCs on the ground. It helps in creating a real livelihood opportunities for many of these transactional BCs जो आज तक सिर्फ 1000 2000 या 3000 रुपए कमा पा रहे हैं. उनको अगर हम 3000 से 10,000 तक ले सकते हैं तो आप PM के विजन को एकदम फुलफिल करोगे. And thanks to Anand and the Penya team for working with us very closely on this subject as well. हम और आप मिलके आपके डिजिटल नारी ऐप पे ही एक फर्स्ट टाइम एक सेविंग्स प्रोडक्ट बनाया है जो सिर्फ विमेन पे फोकस्ड है और विमेन के लिए बनाया गया है, ताकि जो मैंने पहले बोला था, विमेन को जहाँ चाहिए, जैसे चाहिए और जिधर चाहिए उनको सर्विस मिले सेविंग्स के लिए. So I would urge everybody to explore that piece of the Digital Naari app as well. जो हमने बहुत रिसर्च करके सिर्फ women customers के लिए बनाया है, and वो एक goal based saving product है. So thanks to Penya for having the entrepreneurship and the energy and the enthusiasm to work on new ideas like this, which are not easy. आसान नहीं होता ये सब इंट्रोड्यूस करना. उसके लिए थोड़ा पेशेंस चाहिए, थोड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए और थोड़ा क्रिएटिविटी चाहिए, जो हमें पेनिया बाई के साथ मिला है. And I wish you nothing but great success in the Digital Naari mission. And of course, RBIH is always here to work with partners like you, partners like everyone on this call, to achieve the goal of frictionless finance for every woman in India. And we believe that's the only way we're going to get to a 5 trillion economy or a 10 trillion economy. You can't do that without half the population. So, let's all get our hands together to work towards that mission. Thank you so much for having us today, Alok and Anand. Pleasure is ours. So, Jayatri, over to you. Thank you, Alok. Thank you, Shilpa, for the encouraging words. Like you said, we are really looking forward to working with each and everyone in this panel and to make the vision and mission of 10 lakh Lakpati Didis come true, who are empowered enough to take their life decisions, who are empowered enough to make those financial calls that they should be taking. थैंक यू वंस अगेन. जो सारे सखिया आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़े हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आप डिजिटल नारी ऐप डाउनलोड करेंगे. आपको गूगल ऐप स्टोर में जाके डिजिटल नारी ऐप डाउनलोड करना है. उसके लिए खाली आपका जो आत्मविश्वास है वही चाहिए, आपका जो आगे बढ़ने का जिद है वही चाहिए. बस मोबाइल ऐप चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए इससे अपना आमदनी ज्यादा बनाने के लिए. तो हम उम्मीद करते हैं हम सभी लोग ऐप स्टोर में जाएंगे और डिजिटल नारी ऐप को डाउनलोड करेंगे और अपना जो एम्पावरमेंट जर्नी है वो और आगे लेके जाएंगे. Thank you once again to each and every one of you for this wonderful discussion today. It's been our absolute pleasure to host this panel. Thank you. Thank you and congratulations to Pay Nearby team. Thank you. Thank you, Bharti ma'am. Thank you so much. Congratulations and all. Thank you. Yeah. Congratulations. Thank you very much. Thank you. We look forward to working with you. Thank you so much. Thank you so much. Congratulations. Thank you. Bye. Bye, everyone. Pleasure to see you all. Bye. Bye.